We will start with the classification of organic compounds based on their structure. A very important topic, the classification of organic compound based on their structure. Okay, it's one of the very important classification. There are two classifications are there, but today we are doing with the first. Means we are starting with the first classification. So we have to classify the organic compound because organic compounds are large in number, and because they are large in number, we have to classify them based on their structure. Okay. Yes, the first they classified here as aliphatic, or we can also call them as acyclic, or we also call them as open chain compounds. We call them as what? Aliphatic, or we call them as acyclic, or we call them as the open chain compound. And the second part on the other side, we are having that they're also called as a cyclic or cyclic compound can be called as a closed chain compound. Cyclic can be called as a closed chain compound. So first classification, they are classified as aliphatic or open chain compound. So they are not cyclic. That's why they are called as what? Acyclic. And cyclic means they are called as a closed chain compound. Correct? Now first we'll start with the aliphatic. I'll just leave some space over here so we can write down later. Here I'll just start with the aliphatic. Here we can say aliphatic or acyclic or open chain compounds. Yes, first we'll write down the explanation for aliphatic or acyclic or open chain compounds. Correct? Here, these compounds have a chain of carbon atom. They have a chain of carbon atom. They have a chain of carbon atoms, correct? And are classified as, they further classified as, straight and branch chain. See here, these compounds have a chain of carbon atom. Matlab, no, 2 carbon atom together, 3 carbon atom together, 4 carbon atom together, but they are having a chain of carbon atom, and this chain can be straight chain or it can be branch chain. So aliphatic compound in which the carbon atoms are arranged in the form of chain, and the chain of carbon atom can be straight chain or it can be branch chain.
So first I'll discuss or we'll talk about the straight chain. So here we'll have about straight chain compounds. Straight chain compound in which means in this type of the compound in which carbon atoms are bonded to one or two other carbon atoms. See here, what a straight chain compound. In this type of the compound, the carbon atom, मतलब हमारे पास जो carbon रहेगा, carbon atom is bonded to one or two other carbon atom. I'll take the example. Suppose, for example, we have the example like see here 1, 2, 3. In this example, see first carbon atom attached to how many carbon atom? Directly only one. Second carbon atom directly attached to how many carbon atom? One on the left and one on the right. And the third carbon atom is attached to how many carbon atom? One on its left directly. उसके आगे नहीं देखना, direct contact देखना. So what we see here, first carbon atom attached to only one more carbon atom. Second carbon atom attached to how many? Two more carbon atom. And third carbon atom attached to how many? Only one. So those carbon which are bonded to only one or two other carbon atom are called as a straight chain compound. Are called as what? Straight chain compound. Yes. Now we'll write down the number of hydrogen. Now we know the valency of every carbon atom is 4. Valency of every carbon atom is 4. So already one dash is there. So here we'll write CH3. 2 dash are there. So here we'll write what? CH2. And already one dash is there. So here we'll write CH3. And this structure is called as propane, because we know that 3 carbon atom is called as a prop. Between the 2 carbon atom, there is a single bond, so it can be called as a ANE, propane. I'll take the next example. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correct? Now in this structure, see first carbon atom is directly joined to second carbon atom. Only one carbon atom. Second carbon atom has got one carbon on the left and one on the right. The second carbon atom is joined to how many more carbon atom? 2 carbon atom. Third carbon atom has joined to 2 carbon atom. And the last fourth carbon atom has joined only to one carbon atom. मतलब in entire example, जो हमारे carbon atoms है, they are bonded to one or two other carbon atom. कोई भी 3 carbon को attach नहीं कर रहा है. These carbon atom are bonded to one or two other carbon atom. Correct? So that's why they are called as a straight chain compound. So what is straight chain compound? The compounds in which हमारे पास जो भी carbon atoms रहेंगे, they are bonded to one or two other carbon atom. One or two other carbon atoms. Okay. Now complete the valency. This carbon atom already one bond is there. So how many more hydrogen? 3. This carbon atom 2 bonds are there. So how many more hydrogen? 2. This carbon atom already 2 bonds are there. So 2, and here we'll have what? 3. This carbon atom is called as a 4 carbon atom is called as a bute. Everywhere carbon single bond. So we have to write here N-butane, and this is called as N-butane. Why N-butane? That I'll explain later on. N-butane. So these are the example of straight chain compound where the each carbon atom is bonded to either one or two other carbon atom. Correct? Straight chain. These are the 2 examples. We'll go for the next point.
second here I'll say second we'll have here that is branch chain compounds. Branch chain compound. What is branch chain compound? In this compound, in these compounds, in this compound, at least one carbon atom, at least one carbon atom is bonded to 3 or more carbon atoms. Here in branch chain compound और in the branch chain क्या हुआ यहाँ पे at least one carbon atom, तो हमारे पास बहुत सारे कार्बन आइटम रहेंगे, उसमें से at least one carbon atom जो रहेगा, at least one carbon atom is bonded to 3 or more carbon atom. At least one carbon atom is bonded to 3 or more carbon atom. Okay, then we can call them as a branch chain compound. Example, suppose take 1, 2, 3, and 4. 1, 2, see. Now you can make out here the first carbon atom attached to only one carbon atom. But second carbon atom attached to how many carbon atom? One on the left, one on the right, and one below it. The second carbon atom कितने carbon को attach कर रहा है? 3. Last carbon atom is attached to only one carbon atom. This carbon atom also attached to only one carbon atom. But लेकिन यहाँ पे एक carbon atom जो है वो कितने carbon को connect कर रहा है? 3 को connect कर रहा है. Correct? तो इसलिए कौन सा compound हुआ? Branch chain compound. So here we complete the valency. See the carbon total valency is 4. तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी वन बॉन्ड है, तो विल राइट हाउ मेनी मोर हाइड्रोजन? 3. इसके पास वन बॉन्ड है, तो हाउ मेनी मोर हाइड्रोजन? 3. इसके पास वन बॉन्ड है, तो हाउ मेनी मोर हाइड्रोजन? 3. लेकिन इसके पास कितने बॉन्ड्स है? 1, 2, 3, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, 4. 1, 2, 3 bonds are already there, तो एक हाइड्रोजन आएगा. And this structure is called as isobutane. लेकिन इसका नाम आइसोब्यूटेन क्यों है? ब्यूटेन मालूम है, ब्यूटेन क्यों? बिकॉज उसके पास 1, 2, 3, 4 कार्बन आइटम है, इसलिए ब्यूट. और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? AN, आइसोब्यूटेन. आइसो क्यों? दैट आई विल टेल यू ऑन द लेटर ऑन. ओके, आई टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज वी कैन से 1, 2, 3, 4 and 5. In this structure, देखो, attached to how many carbon atom? 1. This is attached to how many carbon atom? 1. This is attached to how many carbon atom? Only 1. But look at the central carbon atom, which is attached to how many carbon atom? 1, 2, 3, 4. And if carbon is bonded to more 3 or more carbon atom, if carbon at least one carbon atom, at least one, because यहाँ पे कितने carbon atoms है? 1, 2, 3, 4, 5. And out of 5 carbon atom, at least one carbon atom is bonded to 3 or more carbon atom. In such structure can be called as what? Branch chain. तो ये हमारा branch chain है. अब इसका वैलेंसी कंप्लीट करो. कार्बन एक बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3. कार्बन एक बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3. एक बॉन्ड, तो टोटल 4 होना चाहिए. 3 + 1 4. और यहाँ पे भी आएगा 3 + 1 4. लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है. 1, 2, 3 and 4. The central carbon atom will not have any hydrogen atom attached to it because उसका valency already complete है. And this compound is called as neo. It is called as a neo. And how many carbon atom here? 1, 2, 3, 4, 5.
5 carbon atom is called as a pent. एंड कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा, पेंटेन, नियो पेंटेन. लेकिन नियो क्यों लिखा है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. नियो, यहाँ पे मैंने नियो लिखा है, व्हाई इट इज नियो आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, 1 minute, I just write नियो. Neo painted. So we have seen two type of the compounds. So what is our heading? First, we have seen the aliphatic compound. Aliphatic means what? The one which contains in which the carbon atom are arranged in the form of chain. Carbon atom are arranged in the form of the chain, and then chain can be, it can be straight chain or it can be branch chain. So we have also seen what is straight chain, where the carbon atom is bonded to one or two carbon atom, and what is branch chain, where the carbon, at least one carbon atom is bonded to three or more other carbon atom are called as the branch chain. So we have finished with the aliphatic part, correct? Now we'll be going for the cyclic. Cyclic are also called as what? Closed. Cyclic are also called as a closed chain. Okay. So second part will start here. That is closed or cyclic, closed or cyclic compounds. Closed or cyclic chain compound. Closed or cyclic chain compound, correct? Yes. इसके बारे में. Now here, these are the compounds. These are the compounds in which, these are the compound in which carbon atoms, these are the compound in which carbon atoms are joined to form one or more ring. कार्बन एटम्स, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम जो रहेंगे, कार्बन एटम एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और एक दूसरे को ज्वाइन करने के बाद क्या फॉर्म करेंगे, वन और मोर रिंग्स are called as closed or cyclic chain compound. तो यहाँ पे कार्बन एटम रहेंगे, बट क्या रहेगा, कार्बन एटम एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे और एक दूसरे को ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, वन और मोर रिंग्स फॉर्म करेंगे. So carbon atoms will join together to form one or more rings, correct? One or more rings. Then they further, the incoming class further classification होगा. So they are further classified as, मतलब closed chain are further classified as, they are further classified as, A is homocyclic, or carbocyclic compounds. They are classified as what? Homocyclic or carbocyclic compound. Homocyclic or carbocyclic compound. Okay. And second is this. So first we'll say they are classified as what? Homocyclic and carbocyclic.
होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और सेकंड क्या आएगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, होमोसाइक्लिक के बारे में बात करेंगे। और इफ यू वांट आई जस्ट राइट डाउन हियर, दे आर क्लासिफाइड एज व्हाट, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक compounds. Okay, so closed chain compound or cyclic compound are further classified as homocyclic and heterocyclic. Homocyclic and heterocyclic. तो अभी हम पहले स्टडी करेंगे होमोसाइक्लिक के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो हमारे कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, दे आर क्लासिफाइड एज homocyclic and heterocyclic. They are classified as what? Homocyclic and heterocyclic. Okay. So now first we discuss about the homocyclic. 1 minute, just turn the page. Yes, here the homocyclic, or I write small a, homocyclic or carbocyclic, homocyclic or carbocyclic in these cyclic compounds, in this cyclic compound, ring is made up of ring is made up of only कार्बन एटम। तो यहाँ पे जो हमारा साइक्लिक मतलब रिंग, जो रिंग रहेगा, द रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। तो हमारा जो रिंग रहेगा वो रिंग किससे बना हुआ रहेगा, द रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। Okay, that's why it is called as a homo. Homo means all atoms are same. Because all atoms are same, that's why it is called as a homocyclic. Or all atoms are carbon and therefore they can be called as what, carbocyclic. मतलब हमारा जो रिंग रहेगा, रिंग किससे बना हुआ रहेगा, कार्बन से, so we called as the carbocyclic. And because all the atoms are, or since all atoms are same, it can be called as the homocyclic. Now here you can say that is they are, मतलब ये जो कंपाउंड हमारे है ये, they are further classified as, मतलब इनका भी further classification होगा, and they are classified as the first, I can say one, they are classified as alicyclic. Okay, they are classified as alicyclic, and second as aromatic. They are further classified as what, alicyclic and aromatic compound. तो पहले हम लोग alicyclic के बारे में बात करेंगे। तो first we'll have here alicyclic compound. The first one we'll have here alicyclic compounds. Alicyclic compound. What is alicyclic compound? Alicyclic compound, the cyclic compound showing or shows properties, cyclic compound shows properties similar
similar to those of aliphatic compound. See, what is alicyclic compound? Alicyclic compound मतलब what? These are cyclic compound, but they shows the properties. मतलब इनकी जो properties रहेंगे, the properties are similar to those of what? Aliphatic compound. मतलब इनकी property aliphatic compound के तरह रहेंगे. इनकी property मतलब cyclic compound रहेंगे, but इनके property किसकी तरह रहेंगे? Aliphatic मतलब open chain compound की तरह, जिसमें कार्बन कार्बन हम देखा था open chain structure like butane, propane उनकी तरह रहेंगे. I'll repeat again. Thus, what is homocyclic compound? A cyclic compound in which the ring is made up of only carbon atom okay, and they're further classified as what? Alicyclic and aromatic. Now we'll say alicyclic. These are the cyclic compound but shows the properties similar to those of aliphatic compound are called as the alicyclic. And we'll take the example of alicyclic now. Example. The first example we'll take here, that is the first example we can take here 1, 2, 3 carbon atom together. See, 3 carbon atom, but they are in the form of ring, and that's why it is called as the cyclic. But their properties are same as what? Aliphatic. That's why they are called as the alicyclic compound. इस साइक्लिक ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएंगे. इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 आएंगे. और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 आएंगे. करेक्ट. सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज साइक्लो, because cyclic form में है and 3 carbon atom in the ring, so it is called as a cyclopropane. देखो अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्रोपेन देखा था. ये हमारा प्रोपेन था. कौन सा फॉर्मूला? CH3 CH2 CH3 प्रोपेन. और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक. लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम है बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन. और साइक्लोप्रोपेन एलिफैटिक में क्यों आ रहा है? मतलब एलिसाइक्लिक में क्यों आ रहा है? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन प्रॉपर्टी किसकी तरह दिखाई देगा? एलिफैटिक की तरह, इसलिए उसका नाम क्या दिया? एली मतलब एलिफैटिक, साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड. ओके, तो साइक्लोप्रोपेन. ओके, अभी ये स्ट्रक्चर को आप देखो कितने कार्बन आइटम्स है? 1 2 3. तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये हमारा बॉन्ड लाइन, इसे भी पता. सो आइदर यू कैन राइट डाउन लाइक दिस और यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. साइक्लोप्रोपेन ये कौन सा फॉर्मूला है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. व्हाट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? द फॉर्मूला इन विच वी शो द ओनली द और कार्बन आइटम आर कनेक्टेड टुगेदर. ओके, 1 2 3. I'll take the next example. Suppose we'll say here 1 2 3 4. 4 carbon atom. 4 carbon atoms, so it can be called as, and they are in the form of ring, so cyclo. And 4 carbon atom together can be called as cyclobutane. Cyclo क्यों? Because all carbon atoms are joined to each other, so it is called as the cyclo. 4 carbon atoms, so it can be called as the butane. And between the 2 carbon atom there is a single bond, so AN. Now complete the valency of each carbon atom. तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2. इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन 2. इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो विल हैव 2 more हाइड्रोजन. हियर आल्सो विल हैव द 2 more. But same structure in the form of bond line formula can be written in this way. तो एग्जाम में आप ऐसे स्ट्रक्चर लिखो, ऐसे स्ट्रक्चर लिखो, बोथ आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट आई विल टेक हियर, दैट इज 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So it is called as a cyclo. 5 carbon atoms, so it is called as a pent. And between the carbon atom there is a single bond, so it can be called as a cyclopentane. 5 carbon atoms, so cyclo. Sorry, all carbon atom in the form of ring, so cyclo.
5 carbon atoms so pent, and between the carbon atom there is a single bond, so A and E. Complete the valency. Every carbon atom has 2 bonds. So how many more hydrogen? 2 more. Same structure you can write down as what? This is the bond line formula. This is the bond line formula. और इसका और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँगा. That is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and 6 carbon atom अगर है तो यहाँ पे देखो, this is cyclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is called as the hex, and between the carbon atom there is a single bond, so it ends with what? Hexane. It ends with what? Hexane. And every carbon atom already 2 bonds are there. So how many more hydrogen? 2 hydrogen. और सेम स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हो. Yes, this is cyclohexane. Okay. So what is alicyclic compound? The cyclic compound shows the properties similar to those of aliphatic compound are called as alicyclic compound. And with the example of alicyclic, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane. अभी हमें साइक्लिक होमोसाइक्लिक के अंडर एलिसाइक्लिक तो हो गया, करेक्ट. होमोसाइक्लिक के अंडर एलिसाइक्लिक हो गया. नाउ वी हैव टू सी व्हिच वन? एरोमेटिक. वी हैव टू गो फॉर एरोमेटिक. ओके. Yes, aromatic compound. What is aromatic compound here? These compounds contain at least one benzene ring, in their structure are called aromatic compounds. Okay, what are aromatic compound? The compound contain at least one benzene ring. तो जो भी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होना जरूरी है. द कंपाउंड विच कंटेन at least one benzene ring in their structure are called as the aromatic compound. Okay, now we'll see the example of aromatic compound. The first and very common example we are aware of the aromatic compound is, we like have carbon atom arranged in the hexagonal manner. Okay, with alternate double bond. You must be knowing the compound called as a benzene. You must be knowing the benzene. We write the benzene formula as what? C6H6. For what is structure? 6 carbon atom and alternate double bond, and then see carbon atom. This carbon atom has got 1, 2, 3 bonds, so 1H. This carbon atom has got 1, 2, 3 bonds. So every carbon atom already 3 bonds are there. And we know the valency of the carbon atom is 4. So already 3 bonds are there. So we'll have 1 hydrogen atom. Yes, that's why we write the formula as what? C6H6. Because benzene the formula 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atom and 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogen atom. So benzene has a 6 carbon and 6 hydrogen atom. But same structure आप लिख सकते हो और in the same form. हेक्सागोनल रिंग, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है. आप डबल बॉन्ड कहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन बॉन्ड कैसे होने चाहिए? ऑल्टरनेट होने चाहिए. बॉन्ड हैज टू बी व्हाट? ऑल्टरनेट. ओके,
ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ. आई जस्ट गिव द सेकंड. ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, करेक्ट. ये फर्स्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग. दूसरा स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना रहेगा यहाँ पे, तो यू कैन डायरेक्टली भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. हेक्सागोनल रिंग, 1 2 3 4 5 6 carbon atom with alternate double bond, and every carbon atom having 1 H. और यहाँ पे H की जगह मैंने लिखा CH3. H की जगह क्या लिखा, यहाँ पे H रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह CH3 लिखा. And this compound is called as a toluene. It is called as a toluene. लेकिन देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हो. और इजीएस्ट वे में कैसे लिखोगे बेंजीन रिंग, इजीएस्ट वे में कैसे लिखोगे बेंजीन रिंग और ऑल्टरनेट बॉन्ड. और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, CH3. यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, CH3. ओके, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो. आइदर राइट डाउन दिस फॉर्म और बट दिस इज इजीएस्ट. तो व्हाट इज एरोमेटिक हियर, कि हमें जो भी स्ट्रक्चर लिखना है उसमें हमें क्या मिलेगा, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग आना चाहिए. तो देखो यहाँ पे इधर एक ही बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 विद बेंजीन रिंग है. तो नाउ आई राइट ऑल द एग्जांपल इन दिस फॉर्म. तो ये हमारा टॉलुएन है. Other example I will write here as a benzene ring with alternate double bond, and then here we'll write NH2, and this is called as a aniline. It is called as a aniline, and then I'll take one more, a benzene ring with alternate double bond having OH are called as a phenol. ये हमारा phenol है. ये सारे कंपाउंड्स के बारे में हम बाद में डिटेल में स्टडी करने वाले, बट जस्ट रिमेंबर दिस इज ओनली बेंजीन रिंग, दिस इज टॉलुएन, दिस इज एनिलीन विद NH2 एंड फिनॉल. मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच करेगा तो एनिल टॉलुएन, NH2 अटैच करेगा तो एनिलीन, एंड OH अटैच करेगा तो फिनॉल. ओके, ये हमारा एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन हुआ. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, we have seen here the homocyclic compounds are classified as alicyclic and aromatic. Alicyclic and aromatic. And we have seen the example of alicyclic. We have seen the example of aromatic. Now I am going for the last part, that is heterocyclic. Okay. Heterocyclic compounds. Here the cyclic organic compound which contain one or more heteroatom, one or more heteroatom in the ring. One or more heteroatom in the ring are called heterocyclic compounds. See here, what is heterocyclic? The cyclic organic compound which contain at least one or more heteroatom. Heteroatom का मतलब other than carbon. कार्बन के अलावा अगर हमारे रिंग में कार्बन के अलावा अगर कोई एटम है तो उसे क्या बोलोगे, हेटेरोएटम. The cyclic organic compound which contain one or more heteroatom. One or more heteroatom means what? Other than carbon atom in the ring, then they are called as what? Heterocyclic compound. So अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है, देखो एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पे. hetero, I'll just write down the meaning of hetero.
hetero, HETERO, hetero means atom other than कार्बन. हेट्रो मीन्स एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा. मतलब अगर हमारे पास कार्बन के अलावा कोई एटम है तो उसे क्या बोलना है? हेट्रो एटम. नाउ विल टेक द एग्जांपल जो हमें कॉमन यूज करना है. दैट इज 1 2 3 4 कार्बन एटम और यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन एटम. सो वी आर हैविंग अ रिंग ऑफ 4 कार्बन एटम एंड द फिफ्थ वन इज ऑक्सीजन एटम. प्रीवियस एग्जांपल में क्या था? कंप्लीट रिंग जो हमारा था, कंप्लीट रिंग किससे बना था? कार्बन से बना. देखो कंप्लीट रिंग किससे बना था? कार्बन से. कंप्लीट रिंग किससे बना था? कार्बन से. लेकिन यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई एक एटम रहेगा अदर देन कार्बन एटम, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम. करेक्ट. और यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2 and this structure is called as tetrahydrofuran. This structure is called as what? Tetrahydrofuran, or it can be also called as THF. It can be also called as what? THF. और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं. यहाँ पे 6 कार्बन एटम वाला 1 2 3 4 5 6 एटम और रहेगा N. मतलब देखो रिंग में कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 रिंग में, और एक एटम कार्बन के अलावा है तो इसे क्या बोलोगे? हेट्रो एटम. एंड देन कंप्लीट कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4. तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो CH2. यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है तो आएगा CH2. तो हर जगह आएगा CH2. और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है तो 1 2 और 3 मतलब यहाँ पे आएगा H. में मालूम रहेगा आपको. हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, कार्बन का वैलेंसी 4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3. और ये जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम है P-pyridine. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? P-pyridine. देखो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है और ये P-pyridine है. जस्ट विल टेक द 2 मोर एग्जांपल. 1 2 3 4 एंड O. सेम है इसकी तरह ही है. 1 2 3 4 कार्बन एटम एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीजन एटम. लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड. अभी देखो कितने है इस कार्बन के पास? कितने हाइड्रोजन लिखोगे? 1 2 3 बॉन्ड तो विल राइट 4. इसके पास 1 2 3 तो विल राइट 4. 1 2 3 विल राइट 4. 1 2 3 विल राइट 4. और यहाँ पे सॉरी इधर आएगा. यहाँ पे कुछ नहीं. ओके यहाँ पे कुछ नहीं है. एक मिनट. Yes, so it's very clear. So and this compound is called as a फ्यूरन. देखो इसका नाम था टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. यहाँ पे सब जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इसका नाम है फ्यूरन. और इसकी टाइप का एक दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 कार्बन एटम इन द रिंग. देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम इन द रिंग और यहाँ पे आएगा एक नाइट्रोजन. बट यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और डबल ऑल्टरनेट 1 2 3. और कंप्लीट करो बैलेंसी. कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स है? 1 2 3 4. 1 2 3 4. हर एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन. और नाइट्रोजन का बैलेंसी 3 होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है 1 2 3. करेक्ट. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द पाइरिडीन. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पाइरिडीन. ये हमारे कौन से कंपाउंड्स है? हेट्रोसाइक्लिक. व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? The cyclic organic compound which contain one or more heteroatom in the ring. मतलब कार्बन के अलावा और कोई एटम रिंग के अंदर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. एग्जांपल 4 एग्जांपल्स है. टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और P-pyridine जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और दूसरा फ्यूरैन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट. और यहाँ पे P-pyridine
के बीच में भी डबल बॉन्ड, ये एग्जांपल लर्न करना है। तो ये हमारा हुआ क्लासिफिकेशन। तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या था, देखो यहाँ पे the organic compounds are classified based on their structure as aliphatic and cyclic. Aliphatic को क्या बोलेंगे, cyclic and what is open chain where carbon atoms are joined to each other to form a ring chain, and chain can be straight chain and it can be branch chain. In straight chain, carbon atom is bonded to one or two carbon atom. In branch chain, at least one carbon atom is bonded to, at least one carbon atom is bonded to three or more carbon atoms. Then cyclic, the carbon atoms are in the form of the ring. Then ring can be of two types, carbocyclic and heterocyclic. Homocyclic को हम लोग क्या बोलते हैं, carbocyclic. The ring is completely made up of carbon atom, and here the ring is made of carbon atom with one or more heteroatom. Homocyclic are further classified as what? Alicyclic and aromatic. Alicyclic means what? Cyclic compound, but the properties are similar to what? Aliphatic. And aromatic means what? The one which contain at least one benzene ring in their structure are called as a aromatic compound. Okay, we have seen with this classification. It is very, very important one. Please go through it. Okay, we'll stop it over here. Thank you.